तो हिमालय जेताले कहूचे फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय देन हिमालय रो कंप्लीट मैप passes कोन अदर इंफॉर्मेशन एंड फॉल्ट्स एतिक मते देखियार अछि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कोन ना व्हेन इंडिया वाज विथ गोंडवाना लैंड इंडियन ओशन थिला थेसिस सी थिला करेक्ट नो जेतले गोंडवाना लैंड थिला सेतले इंडियन ओशन थेसिस सी रु स्टार्ट हैला होंगे नहीं प्रेजेंट रे इंडिया और एशिया ई मझी रे जेतले इंडिया जो गोंडवाना लैंड करेक्ट नो सी लोअर एशिया लैंड एंड गोंडवाना दीटा थिला देन लोअर एशिया रो जेतले गोंडवाना जेतले भांगी धीरे धीरे भांगी की इंडिया टा जेतले अफ्रीका रो भांगी भांगी आसी बाडे हैला करेक्ट नो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जेतले कन्वर्ज हैला करेक्ट तो से टाइम रे माउंटेन रो फॉर्मेशन गोडा हैला हिमालयन सेडिमेंट्स मैच विथ मेडिटेरियन सी सेडिमेंट्स हिमालय रो जो सेडिमेंट्स एठी जो सेडिमेंट्स गोडा मिलुची सेटा कहारो मेडिटेरियन सी रो सेडिमेंट्स सहित मैच होची दैट मींस एठु जोना पडुची कोन ना देयर इज ए कन्वर्जेंस थ्योरी कि हां आगुरो ए माने थिले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला कांसेप्ट रो एतरे प्रूव हे जाउची सो देयर वाज माउंटेन क्रिएशन डबल कन्वर्जेंस कोन ना कॉन्टिनेंट ओशन एंड कॉन्टिनेंट 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 सी जेतले एठी लोअर एशिया प्लेट थिला एंड गोंडवाना प्लेट रो जेतले इंडिया बाहर के आसुतला देन एठी कोन होची ना ओशन अछि एंड एठी कॉन्टिनेंट अछि ए कॉन्टिनेंट ओशन रो भी कन्वर्जेंस होची करेक्ट नो एंड अल्टीमेटली ओशन हटी गला पर एठी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट रो भी कन्वर्जेंस होची सो देयर इज ए डबल कन्वर्जेंस देन हिमालय को मु केते भाग रे बांटीबी ना चारि भाग रे गोटा होची ट्रांस हिमालय देन ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय एंड शिवालिक तो फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय देन ग्रेटर हिमालय then lesser Himalaya and then finally is Shiwalik. Now in Trans-Himalaya what I have in Trans-Himalaya I have Karakoram, right? Karakoram, I have Ladakh range, I have Jaskar, KLZ. See it is already in ABC format. तो Karakoram सब ऊपर रहिबो okay then Ladakh range then Jaskar range मने रहिबो and finally Tibet range जोटा कि तिब्बत रीजन रे कैलाश मने रहिबो Trans-Himalaya कोन कोन कहली कि this is Karakoram then ABCD रे K L Z already in alphabetically order right Karakoram Ladakh and Jaskar done see एगुडा important मन रखिया पड़िबो काहे ना केतले किछि किछि पर्वत आसीबो जोडा कि मु कहबी कि किछि नेशनल पार्क आसीबो जोडा कि मु कहबी भाई लद्दाख रेंज रे आसी कि किछि पासेस अछि मु तमु क्वेश्चन देखेबी बाजीराम रवि वगैरह क्वेश्चन अछि कि ए पासेसटा लद्दाख रेंज रे जीवो ना काराकोरम रे जीवो ना जास्कर रे जीवो देन तुमको थॉट प्रोसेस लगा पड़िबो एटी माने जस्ट विजुअलाइज करिया पड़िबो कि मैप रे मु कोन पढितली नॉट कि घोसी परिबो नै गुडा ठीक अछि सो काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर देन ए जो काराकोरम रेंज अछि ए रेंज रे तो तमे देखो राकापोसी गोटे अछि राकापोसी गोसेरब्रम and K2 this is Rakaposi this is K2 गढ़ यूनिवर्सिटी जहा को तमे कहउछ and this is Gaserbrम done मन रहइबो काराकोरम लद्दाख जास्कर काराकोरम रे राकापोसी गढ़ यूनिवर्सिटी जोटा कि K2 हमें कहउछे देन Gaserbrम ओके डन देन एपटे लास्ट कहउछि तिब्बत रीजन फाइन तिब्बत रे कैलाश नेक्स्ट सेटा तो सरी वाला ग्रेटर हिमालय देन आसीबो बर्तन जे ग्रेटर हिमालय आसीबो ग्रेटर हिमालय होची नंगा पर्वत टू नामचारमा मैक्सिमम पर्वत तुमको एठी मिल जिवे कोन मैक्सिमम पर्वत तुमको एठी मिल जिवे नंगा पर्वत पूरा जदी तमे देखियो जम्मू काश्मीर रो पूरा एंड को नंगा पर्वत ता माने कोन ना एठी जो मु हिमालय बनेली भाबिनो सो मु जति कवर करली मु एति एरिया रे कवर कर देली बुझियला एति एरिया रे मु कवर कर देली ये हे जाउ ट्रांस रो वाला पार्ट तो ए ट्रांस रे मोर कहली कि गोटे काराकोरम रेंज अछि गोटे लद्दाख रेंज अछि गोटे जास्कर रेंज अछि यार जस्ट इमीडिएट तळे नेक्स्ट बनुची मोर ग्रेटर हिमालय ये पूरा एपटू नेई कि कवर करी 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 ई बीन याडे जाई कि अरुणाचल प्रदेश जाई जिवो बुझियला ना नाही इज दैट क्लियर देन लेसर हिमालय आसीबो लेसर हिमालय रो पोजीशन जस्ट एतिक एरिया देन शिवालिक रीजन आसीबो शिवालिक रीजन रो पोजीशन एठु जाई कि एंड एपटे ए सब एरिया वाला कवर कर दो कोडा हमर नॉर्थ ईस्ट रे जो माउंटेन ओडा छै ना सेगुडा सब शिवालिक रीजन रे कवर हे जो इज दैट क्लियर दिस पार्ट इज क्लियर ओके डन नेक्स्ट तो सी मु एगुडा संगे संगे करी कि मु संगे संगे सेठु क्वेश्चन करबी माउंटेन्स रिलेटेड ठीक अछि तो माउंटेन्स रो जहां भी क्वेश्चन थिवो सेगुडा सेठु एका बेले जति की भी मेजर क्वेश्चन ओडा थिवो चाहे बाजीराम रहो कोरम रहो या फिर विजन रहो एठी हमें कवर करनवा सो फर्स्ट काराकोरम लद्दाख जास्कर एंड तिब्बत राकापोसी K2 गोसेरब्रम all clear put a thumbs up all clear okay the next thing is great himalaya जेतले great himalaya को आसी मु कोन कहली ना नंगा पर्वत रु ने कि नामचा बरवा where is नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर region where is नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश okay so first thing is नंगा पर्वत second तो जम्मू कश्मीर सरी गला देन आसीबो कोन मोर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होंगे नहीं बट हिमाचल प्रदेश किछि जाऊ ही नहीं मु हिमाचल प्रदेश रे आडू मु जाउनी सेथिरे मते पर्वत डायरेक्ट पडछु गुडी ना उत्तराखंड रे जो तमे पडिबो देयर इज अ कामेत कोन ता ना
Kamet, 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 Kamet. This is Kamet, Kamet. This is Bandarpuch. Now what सुनो था Kamet, Bandarpuch, Badrinath, Badrinath, Nanda Devi and Trishul. कौन कौन कहली Kamet, Bandarpuch, Badrinath, Nanda Devi and Trishul. In Nanda Devi गोटे national park भी अछि. Okay, clear? Kamet, Badrinath, Bandarpuch, Nanda Devi, Trishul. मन रहबा कहार पार्ट ग्रेटर हिमालय. नेक्स्ट टिके तळकु पळे आसले मते हिमालय सी तळकु आसनी यूपी को आसनी नेपाल नेपाल रे चलो क्यांगी ना यूपी के आसीओ माने ता तळकु तुमको प्लेन एरिया मिल जिवो. करेक्ट. सो इफ आई विल गो टुवर्ड्स दिस आई विल गेट व्हाट नेपाल रे तुमको बहुत सारा पर्वत मिलबे. कोन ना तमे ताकू मने रखिया पई सिंपल आ सहज बाट होची ताकू मने रखिया अछि डैम जेम. कोन डैम आ जेम पूरा एटा को मु नेपाल बनेली DAM GEM. D for Dhaulagiri, Dhaulagiri. A for Annapurna, M for Mansalu. Dhaulagiri, Annapurna, Mansalu. Arna and Mansa. Because why I am saying Arna and Mansa? Because there is one more called Makalu. So don't get confused between Mansalu and Mankalu. Near to Arna, see Arna so इधर डालमा लगेगा था, but this is Mansalu or Manaslu. जहाँ भी तुम्हें पहुँचो, ठीक है डैम. I remembered as Mansalu, so whatever it is. So DAM, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu. Then GEM, G for Gauri Shankar, E for Everest, M for Makalu. Is that clear? G for Gauri Shankar, E for Everest, M for Makalu. Next, ये जो डैम और जेम ये तीन डांग भीतर ना आगे फर्स्ट तो डैम और जेम मध्य मते गोटे रहला सीसा पंगमा. ओके देन जी आउ ई भीतर चोयो एंड ई आउ एम भीतर लोसे. सिंपल जिंस जदी मु कहबी मु आउ थरे जस्ट बनौची. दिस इज माय डायग्राम एंड एठी मु कहली डी, एठी ए, एठी एम, एठी जी, एठी ई, एठी एम. डन. देन एठी मते गोटे पॉइंट मिलुची, एठी गोटे पॉइंट मिलुची एंड एठी गोटे पॉइंट मिलुची. इज दैट क्लियर? तो मु आको जस्ट नोटेट करची ए बी सी, ए बी सी, डी ए बी. मत बर्तन कह जदि मु कहली मकालु कौन मारियो तमे मकालु. यस क्विक मकालु. सी सुपर. इफ आई विल से अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा बी सुपर. इफ आई विल से गौरी शंकर, गौरी शंकर. Quick. We should not be late. Gauri Shankar A. Fine. So this is what this is my Dhaulagiri. Dhaulagiri, not Dhauligiri. Okay. This is Dhaulagiri. Then B is Annapurna. M for Manaslu. Then G for Gauri Shankar. Then E for Everest. M for Makalu. This one is Sisapagma, Choyo and Lotse. Done. Mane raheba. आउ आ पर कोन अछि आ पर सिक्किम कंचनजंगा जोटा कि सबुटा हमें हाईएस्ट मानु छे. इज द नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स. या दिस कैन बी बट जनरली यू विल फाइंड द सेम ओनली. डिफरेंट इन द सेंस मकालु को मकालु ही लिखाइ थो. मानसालु जोटा म कहू सेटा मनसलु हेतिबो बट चोयो एंड लोसेम बोथ आर सिमिलर ओनली. सेम रहितिबो. गौरी शंकर एवरेस्ट एंड यही थिबो. देन कंचनजंगा. देन जदि मु अरुणाचल प्रदेश को जीबी अरुणाचल प्रदेश रे मोर लेसर हिमालय रे भी आस जिवे. ठीक अछि नै लेसर हिमालय त नुह मोर एथिरे आस जिवे कोथरे शिवालिक रे आस जिवे. किंतु अरुणाचल प्रदेश रो दीटा पर्वत जोटा कि ग्रेटर हिमालय रा पार्ट सेटा होची कांगटो एंड नामचावरमा. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कामेत एंड कांगटो. कामेत इज उत्तराखंड एंड कांगटो that is in what? That is in Arunachal Pradesh. Is that clear? Next, lesser Himalaya. See, मु आगो शिवालिक एगुडार कर दउची पीर पंजन टा आस्तिवनी की लेसर हिमालय. हां करेक्ट. दैट्स व्हाट आई रोट नो. पीर पंजन लेसर हिमालय. ग्रेटर हिमालय रा पार्ट से नो. तो पीर पंजल रेंज. तो पीर पंजल रेंज रे एठी दीटा रेंज अछि. कोन ना गोटे पीर पंजल रेंज आ गोटे होची दौलाधर. गोटे पडिले हमें दौलागिरी हां कि नहीं जोटा कि ग्रेटर हिमालय रा पार्ट. बट देयर इज ए रेंज कॉल्ड दौलाधर दैट इज लेसर हिमालय रा पार्ट. तो आगो होची ऊपर होची पीर पंजल रेंज देन दौलाधर रेंज. एंड ये रेंज, दिस इज नॉट ए माउंटेन, सिंगल माउंटेन, दिस इज ए रेंज.
range of mountains, correct no? So eta cover करूची जम्मू काश्मीर as well as हिमाचल प्रदेश, बट जदि तमे देखियो ग्रेटर हिमालय आमे हिमाचल प्रदेश रो किछि पढू ही नाही, डायरेक्ट जम्मू काश्मीर पर आमे डायरेक्ट पढी दोचे कहारो ना आमे उत्तराखंड को जाउचे हो कि नहीं? इंडिया रो मैप तो एठी नथिबो, सी देखा होचे ना ठी तो जदि तमे एठु देखिबो ना ई समथिंग किछि एमिति हे कि पळौचे ग्रेटर हिमालय बुझी होची, देन लेसर हिमालय को आमे किछि एमिति ही जाउचे हिमाचल प्रदेश वाला कांसेप्ट रे बुझी हला। देन शिवालिक रे तो ये सब छाडी दियो, सो शिवालिक रे ये सब पार्ट कवर हे जिवो, तो एठी गोटे पिरपंजाल रेंज आसीबो, गोटे दौलाधर रेंज आसीबो। डन। सो नेक्स्ट होची कि यूके रो भी उत्तराखंड रे भी किछि जिंस पार्ट कवर हे जाउची कोन ना नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊन, नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊन, नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊन, नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊन, कुमाऊन, KLMN एपडु चलो KMN, नागतिब्बा, मसूरी, कुमाऊन एंड लास्ट को महाभारत रेंज इन नेपाल, नेपाल रो पार्ट कवर हे जो। क्लियर? दिस इज लेसर हिमालय। अल्टीमेटली लास्ट रो होची शिवालिक, तो शिवालिक रे मु अरुणाचल प्रदेश आडू पढिबी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम वगैरह रीजन। तो अरुणाचल प्रदेश रो कांगटो आमे ऑलरेडी पढिचे एंड नामचा बर्मा, कांगटो एंड नामचा बर्मा ए दिटा को थिला ग्रेटर हिमालय रो पार्ट, बट लेसर हिमालय रो पार्ट रे किछि नाही अरुणाचल प्रदेश, लास्ट को शिवालिक रीजन रे आसी। शिवालिक रे चारिटा माउंटेन डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, डाफला, मिरी, मिस्मी, मिरी, मिस्मी, डाफला, अबोर, मिरी, मिस्मी। तो दिस इज डाफला, देन मिरी, मिस्मी, मझरे रोची अबोर। डन। डाफला, मिरी, मिस्मी, मझरे रोची अबोर, मने रहबो अरुणाचल प्रदेश डाफला, मिरी, मिस्मी, मझरे रोची अबोर। नेक्स्ट नागालैंड, नागालैंड रो गोटे पार्ट होची नागा हिल्स, कोन नागा हिल्स, नागा हिल्स बहुत सिंपल कि नहीं सर एटा मोर मन रहबो, नागालैंड रो नागा हिल्स केंदी मन रखबे इजी, नागालैंड, नागा, नागा। डन। एंड सारामती पीक, नागा हिल्स रो सबटो हाईएस्ट पीक होची सारामती, सारामती पीक, सारामती पीक कोठी ना नागालैंड रो। सिमिलरली मणिपुर रो माउंट इशो, माउंट इशो जोटा कि हाईएस्ट पीक कहारो ना टेम्पो पर्वत, मणिपुर रे अछि टेम्पो, टेम्पो सी फास्ट कथा होची सर दीज आर आई थिंक पूर्वांचल रो पार्ट्स ना, करेक्ट। तो से पूर्वांचल सेटा शिवालिक रेंज रे अछि, but I think that is discontinuity between पूर्वांचल and शिवालिक। सी जेतला हमें शिवालिक पढुचे तो हमें माउंटेन रेंज रे पढुचे हिमालय रो ना नहीं, जनरली शिवालिक रे तमर एपटे प्लेन ही आसीबे को पटे हमर एक्चुअली हिमालयन साइड रे, करेक्ट। आउ एपट साइड रे जोटा रहला सेटा सब पूर्वांचल रो पार्ट, बट सेटा ओवरऑली सी शिवालिक रे तमर ओवरऑल कवर हबो काहे कि ना तमर हिमालय कवर होची अप टू सेटू नै कि त्रिपुरा पर्यंत होंगी नहीं। तापरे तो गोटे तमर छोटनागपुर प्लाट्यू आ एपटे आसी जीवो कोन छना मेघालय रो। सर माजिद हुसैन रे देछि फ्रॉम इंदस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र वैली शिवालिक। ब्रह्मपुत्र वैली टा जाउची मोर एपटे नामचा वर्मा देई कि एपटे से चलिबो को पटकू ना पद्मा हे कि से फ्लो करबो बांग्लादेश को, करेक्ट। हां तो सी मु से बुक्स ओडा तो पढिनी, मते सुदर्शन गुजर सर जहा पढिचंती तो एगुडा को मु सब शिवालिक रो रेंज रे नउची काहे कि ना according to his concept or whatever it is from wherever he studied, so basically he considered this as under शिवालिक range। so देखिबा जदी क्वेश्चन से बळे आसीबो कि एगुडा शिवालिक रेंज रो पार्ट ना नहीं ताले हमें सेठी क्लैरिफाई मिलि जिवो, जदी क्वेश्चन रे जतियो ताले हेटु भी किछि मिलियो, बट एटलीस्ट एबे खाली हमें माउंटेन काहाटी कोन को स्टेट रे कोन अछि सेगुडा हमें कवर कर दोचे। तो मु एबे एगुडा को मानि के चलछि कि दीज आर पार्ट ऑफ शिवालिक पूर्वांचल रो पार्ट। तो मणिपुर रे माउंट इशो अछि जोटा टेम्पो पर्वत रो पार्ट एंड गोटे अछि लाइमाटो, लाइमाटो। तो फर्स्ट होछि नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। दिस इज क्लियर, दिस इज नांगा पर्वत, नागालैंड रो नागा पर्वत एंड आर हाईएस्ट पीक होछि सारामती। मणिपुर रो होछि माउंट इशो जोटा कि हाई कहार ना टेम्पो पर्वत एंड एठी होछि लाइमाटो, लाइमाटो। देन मिजोरम रो होछि मिजो, मिजो हिल्स एंड एठी गोटा होछि ब्लू माउंटेन और ताकू कोन फांकुई, दैट इज द हाईएस्ट पीक फांकुई ब्लू माउंटेन एंड एठी गोटा होछि फांकुई लुसाई,
भाई भौणी फांकुई लुसाई मन रहिजो मिजो डन त्रिपुरा रो अछि बेतलिंग शिव त्रिपुरा बेतलिंग शिव त्रिपुरा शिवजी बेतलिंग शिव डन देन आसाम वेरी सिंपल मिरी मिस्मी आबोर ये होजी अरुणाचल प्रदेश रो पार्ट बट आसाम रो पार्ट रे मिकिर रेंगमा पटकाई बुम एंड बराली रेंज ई दिटा गोटी के छाड़ो बट मिकिर एंड रेंगमा मन रखो मिकिर एंड रेंगमा कोन कहले मिकिर एंड रेंगमा आ गोटे रहला पटकाई बुम एंड बराली रेंज ये होची रेंज गुडा ठीक अछि दैट मींस नंबर ऑफ माउंटेन्स अछि तो पटकाई बुम तो आसाम एठी हेले एपटे भाबो अरुणाचल प्रदेश हो कि नहीं एठी नागालैंड एठी मणिपुर एठी मिजोराम एया ना कांसेप्ट तो जदि मु एई तीनटा को जोड़ी देबी ये हे जो मोर पटकाई बुम जदि मु एई तीनटा को तळ तीनटा को जोड़ी देबी ये हे जो मोर बराली दैट्स इट सॉरी ऊपर तीनटा एंड तळ तीनटा अरुणाचल प्रदेश आसाम एंड नागालैंड मु कोन कहली दिस इज आसाम दिस इज अरुणाचल प्रदेश दिस इज नागालैंड दिस इज मणिपुर दिस इज मिजोराम एया ना तो जदि मु ऊपर तीनटा को जोड़ी देबी व्हिच इज अरुणाचल प्रदेश आसाम एंड नागालैंड ताले मते मिलबो पटकाई बुम जदि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मणिपुर को जोड़ी देबी ताले मते मिलबो बराली रेंज को तार डाउट अछि क्लियर फाइन नेक्स्ट मेघालय not from Himalaya. This is not from Himalaya. Till now, whatever we studied, they are part of Himalaya, but this is not part of Himalaya. Garo Khasi Jaintia separated from peninsular by Rajmahal Gap. Malda Fault, Rajmahal Gap द्वारा ये गैप है राजमहल हिल्स एपटे होची तमरा गारो खासी जयंतिया एपटे होची छोटनागपुर प्लेट्यू करेक्ट नो सो दिस इज द fault area so till now mountain Himalayan mountain cover simple jinsa Himalayan mountain cover okay let me try to go here this is visible right my screen is visible I'm putting certain points okay consider this whole part as A this is B this is C and you can consider this is D this is also A this is Nepal okay done then this is B C D A B C D Haba? We'll go quickly okay if I'll say Kamet what you will mark Kamet jaldi Kamet Nanda Devi Trishul C that is Uttarakhand correct no okay fine if I'll say Kangto Namcha Barwa Miri Mismi Abor Dafla Miri Mismi Abor Dafla yes that is B that is Arunachal Pradesh okay if I will say Laimato D Manipur super if I will say Blue Mountain Fangkui Lusai Blue Mountain Fangkui Lusai Mijo Hills yes Mizoram if I will say K2 or Gosebrom Godwin Rakaposi yes Jammu Kashmir region super if I will say Pir Panjal or Dauladhar range those will be span across Jammu Kashmir and Himachal Pradesh super then if I will say I think that is fine Chalo, let's do something questions Trans-Himalaya
6টা क्वेश्चन लेट्स सी oh sorry trans The biosphere reserve is located in Indian Trans-Himalayan region and is marked by extreme climatic condition and low precipitation in 2025. It was included in the World Network for Biosphere Reserve designated by UNESCO. And here trans re अछि कोन को नंदा देवी. This is not in trans. Cold desert, Kanchenjunga Biosphere Reserve, Dihang Divan. Yes. Cold desert. Everyone. Cold desert. Yes. Cold desert. से यूनेस्को रे भी मिसी जाई 2025 सुपर. And eta forum रा ओटा टेस्ट थिला. Second question. With regard to Trans-Himalaya, consider the following statement. The Jaskar, Ladakh and Kailash range are part of the Trans-Himalaya. 100%. Kaku doubt lagu bhai 111 C kotigala. Siachen glacier is located in Ladakh range. I don't know. Let's see. In India, the Trans-Himalayas are spread over Ladakh and Jammu Kashmir only. Is it? In India, Trans-Himalayas are spread over Ladakh and Jammu Kashmir only. Is it span across Himachal Pradesh also? What do you think? Okay. Based on only, you are saying okay. Karakoram, Ladakh and Jaskar. Is Jaskar range going towards Himachal Pradesh or not? That is my question. I don't know. So we'll go with 1 and 2. Let's see. Answer is 1 only. Siachen glacier, that is also not in Ladakh, that is in Karakoram. Okay, fine. No issue. So let's see. The mountain range situated in north of Great Himalaya ranges are called Trans-Himalaya. Done. It runs parallel to the Great Himalaya range for a distance about 1000 km in the east-west directions. Done. It is average elevation of 3000, not required. Jaskar, Ladakh, Karakoram and Kailash are the main Trans-Himalayan range. Done. The northeasternmost range of Trans-Himalaya is in the Karakoram range. We know. The Ladakh range lies to the south of the Karakoram. It lies between the valley of Indus to the Syok river. Na Indus ru neki Syok. Means Syok is a tributary of Indus. The Jaskar range lies to the south of the Ladakh. It runs parallel to the Great Himalaya, extending southeast from Suru rivers to Upper Karnali river. Kamet peak, chota ame kohule Kamet, 25,000 is the highest peak in this region. See, Kamet ame podhuche Greater Himalaya re, but it is still kuahoji ki Kamet ro gote peak. Kamet parbat ame podhuche Greater Himalaya, but Kamet peak is the highest peak in this range. The Siachen glacier is located in Karakoram. The Siachen is the longest glacier in Karakoram. It is also longest glacier in India. So statement 2 is not correct. This is not in Ladakh. This is in Karakoram. Fine. Trans-Himalaya are found in Jammu Kashmir and Ladakh and the Spiti region of Himachal Pradesh. Again, that's what I am saying, because the last Jaskar, that is going towards Spiti regions. So Spiti regions of Himachal Pradesh also. So statement 3 is not correct. Is that clear? Trans-Himalaya? This question sufficient? Okay. This is Bajiramro question. Okay. Power of preliminary question. Okay. Done. Next question. Bajiramro. The ruminant found in the highest altitude of Kashmir and the Trans-Himalaya region is also known for its snake-eating habit. There is something called ruminant. Okay. Current affair question. Meluchi kouthi ruminant na Kashmir ra higher altitude re, which is in Trans-Himalayan latitude. It is a snake-eating habit. It is known for its snake-eating. Ruminant ta snake-eating goes. Its population is under stress recently because of the rampant hunting and habitat loss. This is the most likely description. So this is like species. Okay. The Hangul, Markhor, Red Panda, Kasturi Beg. Yes, Hangul. But answer is Markhor. Let's see if Markhor is a rare species of wild goat belonging to Hangul goat. That's why I was also thinking like I will also mark as Hangul. But yes, Can Markhor. goats eat snake? Yes, ma'am. Can goats eat snake? See, that's what. Let's see. I also didn't know. So I thought like okay, maybe the explanation might be different. It might be Hangul. Let's see. Markhor is a rare species of wild goat belonging to the family of Bovidae, order. What is this? Arthiodae something. It is known for its thick fur, flowing beard, and crooked horns. It is native to the mountain regions of Central and South Asia, including Pakistan, Afghanistan, India, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Done. It is found between an altitude of this. Done. Jammu Kashmir is the home for estimated 300 Markhors, known for its inhabiting dense pine and birch forest. The species is seldom seen outside in its habitat also.
It is the Islamic Republic of Pakistan national animal and is classified as near threatened by IUCN. The markhor kills and eats snakes. After this, while ruminating, a foam-like substance comes out of the animal's mouth, which is collected by locals to make antidote for snake poison in case of snake bite. Okay. It is listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. It faces threats for human activity and natural factors. The greatest threat to the survival of the markhor are habitat loss, illegal hunting, including poaching and climate change. Okay, we have to remember this. Markhor, and it might be confusing because this is a goat. This is a goat which is eating snake also. And a muhor gote phenotype bahare jo phenotype ki emane taku use korchandi antidotes for snake bite. Mone raheba? See, ମୁଁ भी पढुची तम मान सहित एमति कि मु एग्जाम दे पारिछि दे पारिनि मु. In the context of Indian geography, which of the following statement best describe the term dhand? Okay, what is this dhand? There are narrow tidal channels found in the coastal deltas that connects estuaries with open seas. This is current affair question or what? Okay, this one. They are shallow saline depression or playas found in the arid region of western Rajasthan. They are crescent-shaped oxbow lakes formed due to the meandering of Himalayan rivers. Okay, they are glacial meltwater lakes found in the high altitude bases of the Trans-Himalayas. Dhand. I don't know. Let's guess. कौन लागो इतकी चारटा ऑप्शन अछि इथरु ही मते गेस करियार अछि बेस्ट ऑफ धंड बी they are shallow saline depressions or playas found in the arid region of western Rajasthan. Okay, tidal channels found in the coastal deltas and connect estuaries and open seas. Estuaries and open seas. Estuaries and open seas. Estuary is already depth and open sea. What the connection? They are shallow saline depression or playas found in the arid region of western Rajasthan. Okay. They are crescent-shaped oxbow lakes formed due to the meandering of Himalayan river. Okay, I prefer C. I don't know, but answer is B. Okay, super. So B, someone told that is correct. They are shallow saline. The dhands of Rajasthan, whoever knows, dhands of Rajasthan, the saline playas of the Thar desert. In the diverse physical geography of India, regional landforms often carry unique local names that reflects centuries of human environment interactions. One such term is dhands. Okay, word specific. What are dhands? The term dhand refers to the shallow saline depression or playa lakes found primarily in the Thar desert region. These geographical features are essentially seasonal wetlands or desert lakes that occupy safe low-lying basins which fill up water during the monsoon. Fine, no issue. Over the time, due to the high evaporation rate and minimal outflow, the lakes become saline. The salt residue aeolian origin. The formation of the dhands is typically attributed to aeolian process shaped by wind action in sandy desert environments. Okay, notable dhands in Rajasthan. Okay, chalo. So at least it out a Rajasthan name. 4 number question is done. 5 number question. Pir Panjal Range in the Himalaya. CDS 1 question. Pir Panjal Range in Himalaya is part of what? Shiwalik, Trans-Himalaya, Central Himalaya, Lesser Himalaya. Can I go with Lesser Himalaya? D. Next. NDA 2 question. Where is Oghil or Ghil Pass located? This is a pass or hill. What do you think? There is something called Mintaka, Oghil, and Karakoram Pass. So Nepal Himalaya, Sikkim Himalayas gone, Eastern Himalayas and Trans Himalaya. I'll go with Trans because Karakoram rest. Yes. So I'll discuss the passes also. Hope you are clear, right? Trans Himalaya. Let's suppose next Greater Himalaya. Question, let's see. Consider the following mountain peaks of the Himalayas: Kamet, Nagatibba, Nanda Devi, Godwin Austen. How many of them above peaks are part of the Greater Himalaya? See, Godwin Austen, khatam, because that is part of what? Trans Himalaya, no? Trans, done. Nanda Devi to Nanga Parbat. Those are part of, Nanga Devi, Nanga Parbat to Namcha Barwa, correct? So Nanda Devi e bhitere asibo Greater Himalaya re. Nagatibba, Mashuri, Kumaun, seta to Lesser Himalaya. Hongi nahi? And Kamet, tamane dita. Kamet mu padhithili Kamet, Bandarpuch, Nanda Devi, then Badrinath and Trishul. So Kamet au Nanda Devi e dita ko das jibe. So only 2 I'll go for. Answer is only 2. Godwin Austen. See, whatever we know from the discussion, from there only we are doing, right? So, ye 4 test number 35. Next question.
The Siachen glacier and the Gangotri glacier are located respectively in the, बढ़िया question, already Siachen glacier हमें already कॉले होंगी नहीं, located respectively in the Middle Himalaya, Shiwalik, Greater Himalaya, Shiwalik and Karakoram range. Is it Shiwalik, Karakoram range and Greater Himalaya? Fine. See, it is not in Ladakh, it is in Karakoram होंगी नहीं, Siachen glacier. Already got a question already करके दिले. Yes. So answer will be Karakoram and Greater Himalaya मझरे. Super. Next question. Structurally, the Meghalaya region is part of what? Shiwalik range, Deccan Plateau, Greater Himalaya, Aravalli range. कौन लिखियो बताओ? Structurally जो तब लिखियो. Meghalaya region, Deccan Plateau रे जीवनी, Greater Himalaya रे जीवनी, Aravalli range रे जीवनी. Then मु मारी भी कौन finally मत जहाँ मिलियो इटा NDA 1 रथिला. Shiwalik range मारी, but इटा structurally से कोची Deccan Plateau. Shiwalik रे मु भाबुतली Shiwalik रे जीवो, but से जो पढ़ी थिले ना last को this is not part of Himalaya. लिखी थिले ना मु खाता रे. तो मते लागिला कि मु मार देबी कि बट डेकान प्लाट्यू मु जानि छि तळे, बट राजमहल गैप मने पडुछि छोटनागपुर प्लाट्यू रु सेपरेट होउछि. तो इंडिया ऑफिशियल आंसर की सेथे मु कहउछि. तो इंडिया ऑफिशियल ऑलरेडी ये क्वेश्चन पचारि सारि छि, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन सेटा ही पचार दो 2016 रो क्वेश्चन एनडी. स्ट्रक्चरली द मेघालय रीजन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लाट्यू. इट इज detached block of Deccan Plateau separated from the main island seeded by Malda gap, Malda fault, जोटा कि राजमहल गारो गैप, गारो खासी जयंतिया एपट होछि राजमहल हिल्स. तो सेटा होछि मालदा fault. The separation occurred due to the faulting caused by the northeastward movement of the Indian plate during the Himalaya orogeny, which created a depression later. The plateau is composed of ancient crystalline. Structurally, tenu ye kahara part Deccan Plateau of plant. Is that clear? Right. See, there will be more questions also, but whatever is coming with that name, I am just trying to search it. Consider the following hills and ranges of the Himalaya. Fine. How many of the following are part of Lesser Himalaya? Okay, Lesser Himalaya. मते तो मैं कहूँ मनसलु. इटा हमें already पढ़ी चे कि भाई this is not part of Lesser Himalaya. ये Greater Himalaya वाला part रहती because dam gem वाला concept ये Himalaya, sorry, Nepal वाला concept. Indrashan I never studied. Kedarnath, Badrinath I studied. Kedarnath I am not sure. Nanda Devi I didn't study. Lesser Himalaya रे. Nagatibba I studied. तो 5 टा correct अछि. Out 2 3. See, एक है वो 4 टा को मु काट दे परिबी. Correct no? एक टा को मु काट दे परिबी and 4 टा को मु काट दे परिबी. नंदा देवी भाई मोर दरकार नहीं because नंदा देवी बद्रीनाथ ये सब ग्रेटर हिमालय पार्ट. मनसलु ये डैम जेम वाला कांसेप्ट ये भी नहीं. नेक्स्ट रहला कि इंद्रासन केदारनाथ. This is I am 100% sure. If this is I am 100% sure, कोडा कहले मु 100% sure. मु कहले कि नागतिबा I am 100% sure. तो 4 तो केबे होबनी, all 5 भी होबनी. C D पळेला only 2 और only 3 होंगे नहीं. Only 2 only 3. तो नागतिब्बा सहित केदारनाथ इंद्रासन or both. Now 50-50. I will go with a guess. Nothing will work here. Correct? No Brahmastra will work here. Only 2 or only 3. 5 टा रो जदी आसुची I will go for 3. Let's see. Answer is only 2. Let's see. तो एथरे कोड आसुनी. The Himalayan range, so 0.3 is not correct. 0.3 is not correct. Kedarnath is not correct. So Indrasan is correct. Okay, fine. The Greater Himalaya, I'm doing the Greater Himalaya Himadri, the Lesser Himalaya Himachal, and Shiwalik. The Greater Himalaya are the northern. It contains this is not the part. Is the 8th. So 0.1 is not correct. Already I mentioned. Mount Kedarnath is also located in Greater Himalaya. Kedarnath. तो बद्रीनाथ सहित तो मैं मानी नबो कि भाई केदारनाथ को. तो केदारनाथ डोम. So say point the temple Kedarnath is at Greater Himalaya. Nanda Devi is part of Greater Himalaya. So only 2 say kochi. Nanda Devi is part of Greater Himalaya. Then 4 is not correct. Nanda Devi is not part of Greater Himalaya. सेटा भी कटि गला. ताले कोटा part 0.5 is correct. जोटा कि मु जानि थिली. आउ गोटे कोटा correct. 0.4 is also not correct. 0.2 is correct. 0.2 is correct. So 0.2 is Indrasan. Mane rakho. Indrasan hoji latter part ro, Lesser Himalaya part and Nagatila. Now where is Indrasan? That I have to see. Indrasan is the highest peak of Pir Panjal range of Lesser Himalaya. Right? This is one more valid point. कि एटा को मने रखो कि जो Indrasan highest peak of Pir Panjal range
पीर पंजाल रेंज होची लेसर हिमालय रा पार्ट पीर पंजाल दौलाधर मन रहबो क्लियर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तीनटा क्वेश्चन थला द हिमालयस एटा कोठी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 1994 क्वेश्चन The Himalayas are formed of parallel fold ranges of which of the oldest range Shiwalik range lesser Himalaya greater Himalaya Dauladhar range Himalayas are formed of parallel fold range of which of the oldest range कौन लागू छै greatest Himalaya range lesser Himalaya range Shiwalik range Dauladhar oldest range की हेतिबो is it greater or lesser or Shiwalik or Dauladhar this is bit confusing Shiwalik range जोटा कि होची लास्ट को बनउची से धीरे धीरे बनउची भी करेक्ट नो जत्ते तळकु आसीबो से माने सबटु ओल्डेस्ट होतिबे तो सिए पचारुची कि Himalayas are formed of a parallel fold range of which the oldest range is काहे ना जत्ते पाखो ट्रांस हिमालय सेठी हिमालय रा क्रिएशन भी होतो काहे ना बाडा बाडी कि नुवा नुवा हिमालय भी बनउथिबे बट Shiwalik range यस मो हिसाब रे तो सेटा ठीक काहे ना जदि तमे तळकु आसीबो आरावली रेंज रे सारे बहुत ओल्डेस्ट तो आई विल गो विथ Shiwalik range the answer is Great Himalaya let's see the Himalaya system is divided into distinct parallel Trans-Himalaya the Greater Himalaya or Himadri then the Lesser Himalaya which is called Himachal and Shiwalik with the Great or which is called Himadri forming the central oldest axial fold among with the peripheral Himalaya fold ranges geographical uplift history indicates that the Lesser Himalaya and its spores like Pir Panjal Dholander were the uplifted later during the subsequent phases of Himalaya origin making them younger than the central Great Himalaya. Stanford competitive exam key also record the Great Himalaya ranges are the oldest of the parallel. Okay, because confusing. So just remember that Great Himalaya range is the oldest one, then the lesser. Okay, and Shiwalik, हमें जो perspective में होते ले Shiwalik range रो, तो consider कि Shiwalik पर plain गोड़ा जाए, तो Shiwalik गोड़ा last को आस्ते but generally plate tectonic theory अनुसार जो माने सबुटु दूर रे थांती convergence रो सेही माने ही सबुटु oldest थांती, होंगी नहीं? से पर्सपेक्टिव रे देखिया गले Shiwalik ठीक लागुतला बट द आंसर इज कमिंग टू बी ग्रेटर हिमालय इवन स्टैनफोर्ड रो से माने भी कहउछ रे ग्रेटर हिमालय सो विल कंसीडर इट एंड यूपीएससी रो की भी कहउछ ग्रेटर हिमालय फाइन द पिरपंजल रेंज ऑफ हिमालय इज पार्ट ऑफ व्हाट एंड एटा कहार क्वेश्चन सीडीएस 2016 रो क्वेश्चन पिरपंजल रेंज कहार पार्ट Shiwalik ट्रांस हिमालय सेंट्रल हिमालय लेशर हिमालय यस व्हाट इज द आंसर डी एवरीवन ओके सो डन Okay, chalo.